Hello students. Today we will learn mole concept which is included in class 10th and also in class 11th. So let's start mole concept. So mole, what does mole represent? Mole, it represents the amount which contains the number of atom which is present in 12 gram of C12 isotope. We used to take C12 isotope as a standard, and based on that we have to calculate the number of moles and weight and everything. So mole, you can say this is amount of substance which contains which contains same number of atom present in carbon 12, whose of 12 ग्राम. So कार्बन 12 का अगर मैं 12 ग्राम लूं तो इसमें इस कार्बन 12 में जितने अमाउंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ दिस अमाउंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, दैट रिप्रेजेंट 1 मोल. मीन्स कार्बन 12 का 12 ग्राम में जितने एटम प्रेजेंट है, number of atom present in 12 gram of C12. Okay, amount of substance, whatever the substance we will take, उसका उसमें कितने एटम प्रेजेंट है, that is present in 12 gram, that is known as 1 mole, and that number is represented by a number that is called Avogadro's number. तो यहाँ पे हम एक चीज सीखते हैं कि 1 मोल में कितने नंबर प्रेजेंट होते हैं. दैट इज अ नंबर 6.022 into 10 to the power 23 atoms, और यू कैन से दैट मच यूनिट और दैट मच पार्टिकल्स. ठीक है, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन अगर मैंने लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन मैंने लिया, तो इसमें कितने एटम प्रेजेंट होंगे. दैट इज एवोगाड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 atom. That represent 1 mole. Okay. अब यहाँ पे एवोगैड्रोज नंबर प्रेजेंट है 12 ग्राम. अब हम किसी भी एटम का वेट अगर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. यहाँ पे हम किसी भी एटम को कंपेयर करेंगे किसके साथ, कार्बन 12 के साथ. तो रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज व्हाट इज दैट, number of times it is that atom is heavier than 1/12 of carbon 12. कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से वो एटम कितनी ज्यादा हेवियर है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास. तो यू कैन राइट मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट के एक एटम का मास को हम कंपेयर करेंगे 1/12 of mass of an atom, कार्बन के एक एटम C12 एटम से, कि 1/12 से वो एटम कितने हेवी है, और उसके मास को हम लोग यूनिट U में कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1 U. तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालेंगे RAM, इसका यूनिट होगा U, दैट इज इक्वल टू, अगर ग्राम में किया जाए तो 1 U इक्वल टू 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम. हमारा मोल का रिलेशन किस में आया है, ग्राम में. तो यहाँ पे हम रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का वेट ग्राम में निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. तो व्हाट इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट कर लिया यू में. अब उसको अगर हम ग्राम में निकाले, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. सो व्हाट कैन यू राइट, दैट इज एटॉमिक मास
इन ग्राम, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, और इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। किसी भी एटम का हमने 1 ग्राम एटम लिया मीन्स उसका एटॉमिक वेट हमने किस में लिया, ग्राम में। ठीक है, अगर ये हम यहाँ पे किसी का एटॉमिक, लाइक मैंने नाइट्रोजन एटम लिया, इसका नाइट्रोजन एटम का वेट कितना होगा, 14 ग्राम। दिस 14 ग्राम, दिस मीन्स नाइट्रोजन एटम कार्बन से अगर कंपेयर करें तो ये नाइट्रोजन 1/12 ऑफ कार्बन 12 से 14 times heavier, that 14 you will write, okay, and in gram you will say that 14 gram, okay, you will multiply it by number and we say just 14 gram, and this 14 gram is equal to 1 mole. ओके, तो नाइट्रोजन एटम का 1 मोल लिख लिया मैंने, 1 मोल, इफ आई से 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, ओके, दैट मच मीन्स 1 मोल नाइट्रोजन का लिया, मतलब नाइट्रोजन एटम का 1 मोल मतलब कितने ग्राम होंगे, 14 ग्राम। अगर इसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट दैट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। सिमिलरली अगर मैं वेट मॉलिक्यूल के टर्म में लूं, देन वी विल कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो क्या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या बोलेंगे कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का मैं 1 मॉलिक्यूल अगर लूं तो दैट 1 मॉलिक्यूल इज हाउ मेनी टाइम हेवियर देन 1/12 ऑफ C12 आइसोटोप। यहाँ पे हम मॉलिक्यूल को कार्बन के 1/12 पार्ट से कंपेयर करेंगे। सो मास, व्हाट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मास ऑफ एन मॉलिक्यूल बाय डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। ठीक है, तो कार्बन 12 के 1/12 से हमने मास निकाल लिया। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को अगर हम ग्राम में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मीन्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, दैट यू कैन से मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। कोई भी मॉलिक्यूल लाइक H2 लिया मैंने, एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वी विल रिप्रेजेंट एज H2। 1 H2 में कितने मॉलिक्यूल है, दो एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है। अब यहाँ पे H2 का एटॉमिक वेट क्या हुआ, यहाँ पर 2 ग्राम, तो 2 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, और यू कैन से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं 2 ग्राम में कितने 1 मोल है, कितने एटम्स है इसमें, हाउ मेनी मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो इन दिस केस यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स equal to, that is also equal to 6.022 into 10⁻23 molecules। अगर मैं इसी को पूछूं नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो H2, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स H2, और यू कैन से हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मतलब हमारे पास क्या है, H2 है, कितने एटम होंगे, दैट इज 2, दैट इज 2Na, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो 1 मोल को हम इस तरह से कंपेयर करेंगे किसी का वेट। तो 1 मोल हमने देखा क्या, कार्बन का 12 ग्राम में कितने एटम प्रेजेंट है, दैट विल रिप्रेजेंट एवोगाड्रोस नंबर। अब किसी भी एटम का वेट हम कार्बन के 1/12 से कंपेयर करके हम उसका एटॉमिक वेट निकालेंगे। एटॉमिक वेट निकाला, उसको हम मोल में कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली हम अगर वॉल्यूम में
वेट में दिया, नंबर में दिया है तो भी हम मोल में उसको कंपेयर करेंगे. नाउ से मोल का रिलेशन विद वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड मोलार वॉल्यूम. So what is molar volume? Molar volume. Volume of gas, any gas, जिस गैस का हम लेंगे, ठीक है, at STP is compared with volume of carbon 12 at STP, volume of carbon 12 at STP, that is we calculated, जिसको हमने कार्बन 12 का कैलकुलेट किया गया, दैट इज विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर. ठीक है, तो यहाँ पे 1 मोल का जो वॉल्यूम आता है एट एसटीपी, तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हमको कैलकुलेट करना है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हमको उसको कार्बन के साथ कंपेयर करना है. तो कार्बन का C12 का दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर. So this is equal to molar volume, means volume containing by carbon 12, or you can say 1 mole of carbon 12 at STP. So एक 1 mole से we will get all this information, and let's see one question so that this concept will be more clear to all of you. Like मैंने लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन एटम है. अब मुझे इसका नंबर ऑफ मोल, मुझे ऑक्सीजन एटम का दिया गया है 32 ग्राम. ठीक है, नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. ऑक्सीजन एटम मीन्स एक ऑक्सीजन का ग्राम एटम यू कैन, और यू कैन से ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन. हाउ मेनी ग्राम? 16 ग्राम. तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल. आपको दिया गया है 32 ग्राम. 32 ग्राम, हाउ मेनी मोल? 1/16 इंटू 32, दैट इज इक्वल टू 2 मोल्स. ना अगर मैं इसी को बोल दूं 32 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया है मैंने, अगर मैंने क्वेश्चन में बदल दिया, यू हैव गिवन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल है मतलब हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे. वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब वी आर हैविंग O2, इसका वेट कितना हो गया? 32 ग्राम. क्वेश्चन में दिया है 32 ग्राम. सो नंबर ऑफ मोल, so 32 gram of oxygen have 1 mole. ठीक है, लाइक मुझे क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे एक देखिए आप, वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली बाय द रिलेशन, like number of mole we can calculate number of moles. इसके लिए भी फॉर्मूला n लिखेंगे, that n is, you can see what the mass is given. क्वेश्चन में दिया गया है 32 ग्राम. So number of mole is equal to given mass. Now here in question atom is asked, so you'll write atomic weight in gram. If in question molecule is asked, then we will write molecular weight in gram. So we can easily calculate number of moles. Like if in question given, now you have given 49 gram, calculate number of moles in 49 gram of number of moles
in in 49 gram of H2SO4. So here molecule H2SO4 is given, number of mole you have to calculate. So directly apply the formula, number of mole equal to 49 gram of given mass, molecular weight of H2SO4. You can calculate, this will be 2 plus 32 plus 4 into 16, 64, that is equal to 98 gram. So by 98 gram, that is 1 by 2 means 0.5 mole. So directly, easily you can calculate the number of mole by applying this formula, given mass by atomic mass in gram. Similarly, in number, if it is given, like in question, calculate number of moles in 3.011 into 23 atom of oxygen. So here you have given 3.011 into 10 to the power 23 atom of oxygen. अब जितने एटम दिया हुआ उसके मोल निकालने, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 6.0122 into 10 to the power 23 atoms of oxygen is equal to how many moles? 1 moles. कितने एटम दिए हुए हैं? 3.011 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. How many mole? 1 by 6.022 into 10 to the power 23 into 3.011 into 10 to the power 23. You can cut 2, that is equal to half mole, 0.5 moles. तो देखिए नंबर के टर्म में अगेन वी गेट वन फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल. डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट हाउ द गिवन नंबर ऑफ एटम, जो भी दिया है गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, whatever is given in question, divided by Avogadro's number. Avogadro's number that is 6.022 into 10 to the power 23. तो हम उस नंबर से उसको डिवाइड कर देंगे and we will get directly the number of mole. Now अगर वॉल्यूम के टर्म में क्वेश्चन दिया गया है, like in 44.8 liter of oxygen, calculate the number of mole. Calculate the number of moles. So how can we do? We know 22.4 liter of oxygen. How many mole? Equal to 1 mole. You have given 44.8 liter of oxygen. How many mole? 1 by 22.4 into 44.8, that is equal to 2 mole. So here again you will get one formula, number वॉल्यूम के टर्म में अगर हमको निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल. नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम दिया जा रहा है क्वेश्चन में, बाय 22.4 लीटर. इट शुड बी इन लीटर, ठीक है. मिलीलीटर में है तो हम ऊपर वॉल्यूम को भी मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे और आंसर लाएंगे. तो वॉल्यूम दिया है, ठीक है, चाहे नंबर दिया हो, चाहे हमारा वेट दिया है, वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल वेरी इजीली. वन मोर क्वेश्चन, लाइक इन H2SO4, जस्ट इसी को हम देखते हैं कैसे नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ओके, लाइक इन H2SO4, in 1 mole of H2SO4, you have given 1 mole of H2SO4. You have to calculate number of hydrogen atom
You have to calculate number of oxygen atom. Now you have to calculate like number of molecules of sulfuric acid. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 1 मोल दिया है. 1 मोल में क्या होता है, कॉन्सेंट हाउ मेनी नंबर, दैट इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर. नाउ 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल और आंसर 1 मोल ऑफ H2SO4. ऑक्सी हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम है, 2. फॉर्मूला में 2 है, मोल में तो दैट विल बी इक्वल टू 2Na. दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6.022 into 10 to the power 23 atoms of hydrogen. It is as number of oxygen atom, 1 mole. 1 mole of sulfuric acid, number of oxygen atom, you can see 4. 4 फॉर्मूला में है, पूरे मोल में 1 मोल में कितने, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर. हाउ मेनी एवोगाड्रोस नंबर, 4 into एवोगाड्रोस नंबर. That is equal to 4 into 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen. Now number of molecules, 1 mole of sulfuric acid. This H2SO4, this is 1 molecule, means this is 1 molecule. So 1 mole में कितने molecule? 1 mole always contains Avogadro's number of molecules, or you can say 6.022 into 10 to the power 23 molecules of sulfuric acid. Okay, so in this way we can calculate from 1 mole weight also, volume also, or number of atom or number of molecule. Hope you understand this topic. Thank you.